Hello everyone, welcome to my channel. Me, Veena Raut, your tutor and mentor. Today's topic is meiosis. Meiosis is one type of cell division, just like mitosis. Mitosis and meiosis are two types of cell division. So when mitosis takes place, the parent cell divides into two daughter cells. But here, if meiosis takes place in any parent cell, four daughter cells are formed. These four daughter cells, they possess half number of chromosomes of the parent cell. In case of mitosis कौन हुए ना same number of chromosome when a parent cell divides, it forms two daughter cells and each daughter cell possesses same number of chromosomes as the parents. But here, when the cell divides into in meiosis, when a cell divides, it forms four daughter cells, and each daughter cell possesses half number of chromosome of the parent cell. It is the parent cell 2n number chromosome अच्छी ताहले daughter cell n number of chromosome हबो 2n number जदि मनकर 16 हैला ताहले n number हबो कते 8. अच्छा इदी word meiosis. This word derived from a Greek word meo. Meo means to reduce. ହେଲା तो ये आम जान कौन मेयोसिस ता ना दिखाई मेयो मीन्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल. ओके Van Benedin in 1887 first time reported this type of cell division in some specialized cells known as meiocytes. Later meiosis the term by word जो ना दिखाई meiosis the word coined by Farmer and Murray in 1905. Okay. So meiosis is otherwise known as reductional cell division. तो कहीं reductional cell division को होची मैं तुमको कहली when parent cell divides the chromosome number reduces to half in the daughter cells. So it is also known as reductional cell division. And where it occurs in the germ cells of the organisms, both plant and animals, which are known as meiocytes. In primitive time, generally organisms are reproduces by asexual or vegetative method. Asexual by forming different types of spores, and vegetative method कौन जेकोसी भेजिटेटिव पार्ट्रु जदि गोटे रिप्रोडक्शन हो पारे हाँ तो ताको कह जाए भेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. जमती आम गोलाप गछ बा रोज प्लांट आम के लगू आम गोटे स्टेम कटिंग नहीं कि पोती देले सी गछ हो जाए तो सेठी कौन हुए ना से भेजिटेटिव पार्ट स्टेम इज ए भेजिटेटिव पार्ट जमती लीफ रूट एगुड़ा सब तार भेजिटेटिव पार्ट. एनिमल केस रे सेमती लोअर क्लास एनिमल भेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो पारे. तो सही केस कौन हो बोथ इन एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन केस जोटा कि प्रिमिटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट. तो वन पेरेंट एंड दिस पेरेंट डिवाइड्स माइटोटिकली डिवाइड हेले कौन हम ना नेक्स्ट प्रोजेनी जो जो क्रोमोसोम नंबर कौन क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली सेम रही there will be no variation किसी variation आसबनी parent plant जमी देखा तार प्रोजेनी तार जो नेक्स्ट जेनेरेशन एक्जाक्ट सेम कैरेक्टर हम वेरिएशन किसी ना. बट फॉर इवोल्यूशन वेरिएशन इज वेरी नेसेसरी. वेरिएशन ना न्यू स्पीसीज केमती इवॉल्व हे तो वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. फॉर दिस रीजन इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ग्रेजुअली ऑर्गेनिजम्स डेवलप सेक्स ऑर्गन्स. सेक्स ऑर्गन्स डेवलप कला परे दे अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्वड. दी जन पेरेंट रहिबे गोटे मेल गोटे फीमेल. ओके तो इन केस ऑफ एनिमल्स इन दिस मेल पर्सन प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स प्रेजेंट इन टेस्टिस होची मेल सेक्स ऑर्गन. In this testis, primary spermatocyte cells are present. These primary spermatocyte cells are meiocytes, in which
meiosis takes place and it forms haploid spores. Spermatocytes are diploid in chromosome number, but the sperms which are formed, they are haploid. Okay, ତାକୁ କହନ୍ତି male gametes. ସେମିତି in case of female, primary oocytes in ovary are meiocytes. Ovary is the female sex organ, and in this ovary primary oocytes are present. In the primary oocyte meiosis takes place. Eggs or ovums are present, जोटा कि female gamete, से मतलब haploid. In any sexually reproducing organism, in their life cycle, two important events takes place. कौन कौन? गोटे है कौन? meiosis और गोटे है fertilization. So meiosis and fertilization निश्चय रहिबो ता life cycle. Suppose this is organism which is diploid and it produces meiocytes in their sex organs. Meiocytes forms in males male gamete, in females female gamete by meiosis. Then this male gamete and female gamete ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବ. ଇଏ ଗୋଟେ ହାପ୍ଲଏଡ୍ ସେଲ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ହାପ୍ଲଏଡ୍ ସେଲ୍. ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ସେଲ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କହନ୍ତି କ'ଣ? ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍. ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ. ଦୁଇଟି ସେଲ୍ ମିଶିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସେଲ୍ ହେବ, ଯାହାର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନମ୍ବର ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? 2n ହେଇଯିବ. ତ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନମ୍ବର ରିଷ୍ଟୋର୍ସ. ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଉ କ'ଣ ହେଲା? ଦି ଜାଇଗୋଟ୍ ଅଣ୍ଡରଗୋଜ୍ ମାଇଟୋସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମିଂ ଦ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ବଡି. ଓକେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ୍ ସବୁ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ ହେଲା. ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ରେ ମିଓସାଇଟ୍ସ ରହିଛି. ପୁଣି ଏମିତି ଭାବରେ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା. ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ plants, this takes place microspore mother cell and megaspore mother cells. माइक्रोस्पोर मदर सेल रे मेयोसिस हुए, जोटा कि मेयोसाइट्स एवं जो हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन है, दोज हैप्लॉइड सेल्स दे फॉर्म्स ए सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो थे कि मेल गैमेट फॉर्मेशन हुए इन द लेटर स्टेज. ओके, तो मेयोसिस है. मेयोसिस एठी भी से मेगास्पोर मदर सेल मध्य मेयोसिस है. मेयोसिस है पर एठी फीमेल गैमेटोफाइट हम से एटा कौन हम हाप्लॉइड है. एटा डिप्लॉइड, दिस इज डिप्लॉइड, दिस इज हाप्लॉइड. तो फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट भीतर फीमेल गैमेट फॉर्मेशन हुए. The female gametes are formed in the female gametophyte. Male gametes are formed in the male gametophyte. These are haploid in nature. Then these two fuses by fertilization takes place and forming the sporophyte of the plant. In some lower algae, meiosis also takes place in zygote. Zygote जोटा diploid cell, जोटा कि after fertilization of gametes formation हुए. मेल गैमेट haploid, फीमेल गैमेट haploid. फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन हेले जाइगोट फॉर्मेशन है, जोटा कि 2n. एठी मेयोसिस हुए. मेयोसिस हुए कौन? जाइगोट रे. जाइगोट रे जो मेयोसिस है एठी हैप्लॉइड सेल हम, हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन है. जो हैप्लॉइड सेल है एथिरो गोटे गैमेटोफाइट डेवलप करे. ओके, गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स. देन this type of meiosis is known as zygotic meiosis, and this type of meiosis जोटा कि हायर प्लांट रे हुए एटा हला स्पोरिक meiosis. This is zygotic meiosis. And in animals
एनिमल केस आम देखिले तो मेयोसाइट से गैमेट फॉर्मेशन हो गला एटा गैमेटिक कहते गैमेटिक मेयोसिस ओके गैमेटिक meiosis. Now we'll coming to phases of meiosis. Okay, meiosis is completed in two phases. कौन meiosis 1 and meiosis 2. So meiosis completed in two phases, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 again divided into so meiosis 1 is again divided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Then prophase 1 is a longest phase of meiosis 1 and it is again subdivided into 5 subphases. So prophase 1 is the longest phase of meiosis 1 and it is again subdivided into 5 subphases. First is leptotin or leptonema, zygotin or zygonyma, pachytin and pachynyma, diplotin or diplonyma and diakinesis. So leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and diakinesis, which follows by a short interval of time that is known as interkinase. Interkinase. Then it proceeds into meiosis 2. Meiosis 2 is again divided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Okay. Then we will go to detail events of the meiosis 1. This is meiosis 1. डायग्रामेटिकली ମୁଁ ଆଗ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି ତାପରେ କହିବି ସମରାଇଜ୍ କରିବି. ସो ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରଫେଜ୍. ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାଇଟୋସିସ୍ରେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରଫେଜ୍ ଥାଏ ଏଠି ମିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଫେଜ୍ ଥାଏ. ଇଣ୍ଟରଫେଜ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ G1, S and G2 phase. Okay, G1, S and G1, S and G2 phase ଥାଏ. तो इंटरफेज G1 फेज रे ग्रोथ हुए. ग्रोथ है माने RNA प्रोटीन सब सिंथेसिस हुए एंड ऑल द एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. एंड एस फेज रे कौन हुए डीएनए रेप्लिकेशन हुए. डीएनए रेप्लिकेशन है डीएनए रो अमाउंट डबल हुए बा डबल क्रोमाटिड्स appear करे. G2 is very short in case of meiosis. Then it will go undergo first prophase 1 को एंटर करिवो. The interphase रे हमरा न्यूक्लियस रो जदी हमें देखिबा तो हाउ इट लुक्स लाइक कौन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओटा that is remain intact. Okay, nuclear membrane remain intact and nucleolus also remains intact. Okay, and there will be this is an animal cell. So here the centriole is present near the nucleus which is absent in plant cell. Plant cell le sabu process same except this centriole. Here centriole divides into two and it forms the spindle fibers during metaphase stage. But in case of plant cell there will be no centriole or centrosome. The spindle fibers also forms there, but this is formed due to the microtubules present in the nucleoplasm or cytoplasm. Okay, so if we look at the interphasic nucleus ताले हम कौन देखुचे nuclear membrane intact, nucleolus
prominent and chromatin reticulum. ये जो chromatin reticulum कहीं कुहाउची ना these chromosomes remains in an elongated form and it becomes intertwined गुड़े गुड़े ही रही थे intertwined ही नेटवर्क भाया देखा जाए. So chromatin reticulum reticular structure क्या कहते हैं जाल भाया नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को reticulum कहते. The individual chromosome will not be identifiable. Okay. Then आम आसवा कौन prophase 1 को आसवा. Prophase 1 starts. First phase of prophase 1 is leptotin. In leptotin, what changes takes place in the chromosome? So chromosome कौन होची एठी? It is तुमको दुईटी chromosome two pairs of chromosome केवल करके देखेबी. Suppose this is one chromosome, another chromosome. So here we will see that the chromosomes condensed. Chromosome condensation हवा द्वारा कौन होची? The chromosome becomes thicker and shorter. Okay. Chromosomes becomes shorter and thicker and small bead-like structures appeared throughout the chromosome and these are known as chromomeres. Chromomeres. And this is the chromosome. Okay. Here see the centriole divides into two. Centriole divide ହେଇଗଲା ହେଲା. Nuclear membrane intact. Nucleolus also visible, clearly visible. Then sometimes in some cells you will find that all the chromosomes which are thicker and shorter and becomes visible and prominent, they are telomeres. Telomeres कले chromosome रा end को ये end गुड़ा को कहते हैं telomeres. ये जो end point को कहते हैं telomeres. All the chromosomes they attached to a specific site inside the nuclear membrane, forming a bucket-like structure. Synergesis, that process is known as synergesis or bucket stage. Bucket stage कहते हैं है तो bucket भाया देखा जाए फूल जमी फूल तोड़ा भाया देखा जाए. All the telomeres are attached to a certain point of nuclear membrane है कहीं ना से जो homologous chromosome सब पेयरिंग हम से साइज से जना पड़ो किए क्या सागर पेयरिंग हम है. बर्तमान leptotin is complete. Then we will come to zygote. So look at the zygote nucleus. कौन देखुचे आम पेयरिंग ऑफ homologous chromosomes takes place. It is total 4 chromosomes are there and among these 4 chromosomes one set at a diploid number. The diploid number suppose here is 4. The 2 chromosomes gote set and these pink chromosomes another set. ये गोटे n से गोटे n. One from parental one from maternal side mother ठार आसथिबो and the other pairs from paternal side जो फादर ठार आसथिबो. एबे कौन होना प्रत्येक जो सेट बोले आम कहीं कहूँ ना गोटे सेट रे कौन होता है दुईटी जो पेयर थाए गोटे पेयर थाए जो सेट रे सामान होता है पूरा इक्वल होता है. ये से भाई ऑल द क्रोमोसोम्स इन द सेट दे हैव ए सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन द अदर सेट. ये जो सेट्र ये क्रोमोसोम सहित नेक्स्ट आउ गोटे जो सेकेंड सेट अच्छी से तार मध्य गोटे क्रोमोसोम पूरा लेंथ वाइज सेम थी तार सेंट्रोमियर पोजिशन सेम जगार थी. Genes are also present in the same location है. So homologous pair ताको कहते कौन कहते ना homologous. होमो माने कौन सेम तो दीटा क्रोमोसोम पूरा सेम टाइप रो थिबे तो तेणु से माने कौन करते ना parallelly they remain side by side and one type of chemical that helps in the
attachment of the homologous chromosomes এটা कहते synaptinimal complex which is a proteinous liquid or gel-like substance which is present in between these chromosomes, this homologous pair of chromosomes, जोटा कि कौन हुए ना it helps to remain side by side of the chromosomes. Chromosome जो दीटी side by side रहिबा को हेले एमती किछि गोटे लिक्विड जेल लाइक लिक्विड दरकार जोटा कि अटैच करी रखिबो हैला तो ये जो homologous pair of chromosome देखिले now you can see two chromatids in each chromosome. दुईटा क्रोमाटिड देख एथिरे मध्य दुईटा क्रोमाटिड अछि एथिरे भी दुईटा क्रोमाटिड अछि तो बर्तमान हमको 4 chromatids we can identify 4 chromatids remain side by side in two homologous chromosomes. So when these two chromosomes, suppose this is a chromatid, this is a chromatid and center point जो देखुचे that is centromere एमती है गोटे क्रोमोसोम आउ ये कौन हुए here we see two homologous pair of chromosomes remains side by side ये जो side by side रहिले मझिरे कौन है ना synaptonimal complex रही था which helps the attachment of the two chromosomes to remain side by side. तो ये आम नंबरिंग करदे यार दुईटा क्रोमाटिड अच्छी 1 2 एवं यार दुईटा क्रोमाटिड अच्छी 1 2 को आम 3 4 नंबर करदे 3 4. Now see number 1 and 2 1 2 chromatid को कह जो कौन सिस्टर क्रोमाटिड सेम क्रोमोसोम रो दुईटा क्रोमाटिड को कह सिस्टर क्रोमाटिड but the different chromatids of different chromosomes non sister chromatids and 3 4 है sister chromatid 1 2 है sister chromatid किंतु 2 3 एटा और एटा 2 3 को कौन कह जो non sister chromatid है तो ए दुईटा है कौन हमर sister chromatid किंतु 2 और 3 आपको कह जो non sister chromatids है तो बर्तमान आम कौन देखिले ना साइड बाय साइड दुईटा homologous pair of chromosome they remains longitudinally side by side by the help of synaptonimal complex forms in between them. Synaptonimal complex okay and this state जो आम 4 chromatids देखुचे तो टेट्राड स्टेज कह जाए टेट्राड स्टेज जेहेतु 4 chromosomes clearly visible टेट्राड माने 4 तो ताले एठी मेन इवेंट कौन है पेयरिंग ऑफ homologous chromosomes okay nuclear membrane still remains intact and आम जो न्यूक्लियोलस देखुचे सेटा मध्य इंटैक्ट अच्छी सेंट्रियोल डिवाइड्स इनटू 2 and it moves towards the opposite poles okay then आसीबा हमें कौन नेक्स्ट फेज है हमरा look at the picture of packetine ये कौन है ना पेयरिंग होता है आम देखते पेयरिंग होता पेयरिंग है जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स साइड बाय साइड रहे गोटे कॉइलिंग हम सो कॉइलिंग टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ये क्लीयरली देखिपुव कॉइलिंग हो जाऊँगी कॉइलिंग हवा द्वारा से गोटे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट राइज कर गोटे पॉइंट से लगिक रही सो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है से पॉइंट गुड़ा कहते कौन काइजमाटा and the process of coiling of two non-sister chromatids this process is known as crossing over
So main event of packaging is crossing over. Okay. The crossing over takes place in packaging. Question as a crossing over takes place in which phase? The crossing over takes place in packaging of prophase 1. तो जो पॉइंट ऑफ कंटाक्ट जो कॉइल हो जाए से गोटे गोटे पॉइंट एमती लगिक निश्चय रही पॉइंट गुड़ा देखुच लगिक रो पॉइंट गुड़ा तेणु दैट पॉइंट्स आर नोन एज काइजमाटा सो व्हेन दे रिमेन coiled a tension is created and due to that tension some part of the chromatids they breaks in some points these two non-sister chromatids breaks at some points गोटे गोटे जगह तार ब्रेक हो गोटे गोटे जगह ब्रेक हम माने छिंडी जीव and they joined with the opposite chromatids this broken part joined with opposite chromatids तुमको टिके बड़ आकार रे मु देखै देबी एबे ताले तुम क्लियरली जानि परिबो एटा हला कोन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जोटा एटा देखो एटा हला काइजमाटा and this process is known as crossing over हवा द्वारा कौन हो जो ब्रेक हुए क्रोमाटिड ये ब्रेक हो गला मन ए क्रोमाटिड ये ब्रेक है ए क्रोमाटिड ये ब्रेक है क्रोमाटिड ये ब्रेक है देन दिस broken part of the chromosome they exchanged with the opposite chromatids. Look at this picture now. When the chromatids breaks at these points, this part is joined with this chromatid and that part of pink, like a pink part is joined with the blue part and blue part is joined with the pink part. It like a exchange of chromatid parts takes place. It exchange hegala. New chromatids are formed. New chromosome is formed which is different from that old chromosome. ये जो क्रोमोसोम जेनेटिक रिकम्बिनेसन है क्रॉसिंग ओवर है कि ये कौन है ना जेनेटिक रिकम्बिनेसन हो जेनेटिक रिकम्बिनेसन so some genes of this chromosome comes to the opposite chromosome and some genes of that chromosome goes to the next chromosome तो यार किसी जेनेटिक पार्ट एपटू पळै आसिला यार किसी जेनेटिक पार्ट एपटू पळै आसिला एठी मध्ये ठीक से आला दी एंड से आला so now crossing over is over and next phase starts that is known as diplotin okay diplotin is the fourth stage in which uncoiling of chromatids takes place okay look at the picture in diplotin change what changes takes place due to uncoiling of the non-sister chromatids the number of chiasmata जो point of contact हेतिला number of chiasmata is lessen कमी कमी जीव से process को कौन जी terminalization so terminalization is an event of diplotin phase so only these two non-sister chromatids only attached at one point at the terminal position of the chromatid एठी गोटे गोटे पॉइंट रे ही केवल लागिकी रहिबे centrosome divided and already reached the opposite pole nuclear membrane starts disappearing nucleolus also starts disappearing then diplotin phase is complete then coming to the diakinesis रे कौन हम आम एबे देखिबा Look at the picture of diakinesis. Here, nuclear membrane completely disappeared. Nucleolus also completely disappeared. Two centrosomes reached the opposite poles. They form many spindle fibers. Spindle fibers are made up of microtubules. So, these are thread-like, very small, very thin thread-like structures. Thread-like structures.
made up of microtubules. So microtubules. Spindle fibers are made up of microtubules. They are very thin thread-like structures. And this centrosome, they forms many astral rays. These are astral rays. Many astral rays towards the opposite pole and spindle fibers in between. Spindle कहीं कहा ना यार मझीरे देख इक्वेटोरियल प्लेन रे यार विड्थ बेसी आउ सेंटर पोल आड़ को ग्रेजुअली कम जन ये सेपटा कह जाए स्पिंडल सेप से फाइबर गुड़ाक स्पिंडल फाइबर बोली कह सो दीज आर स्पिंडल फाइबर्स. So nuclear membrane ଯେତେବେଳେ disappear କରିଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ chromosomes remain freely in the cytoplasm. Okay. Then coming to the prophase 1 is complete. Prophase 1 complete ହେଇଗଲା. ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା ନା କ୍ରସିଂ ଓଭର, recombination of genes. Okay. जो synaptonymal complex ଥିଲା in between these two homologous chromosomes, a synaptonymal complex gradually completely dissolves in the stage of dikinesis. These two homologous chromosomes, they remain freely in the cytoplasm but remains in parallel position. Only they may contact along with each other only one point at the terminal point. Prophase 1 is complete. Then as we have metaphase 1 को. So coming to metaphase 1. Metaphase 1 रे कौन इवेंट सब होची देखिए. These two pairs of chromosomes, they remain arranged in the equatorial plane. They comes and arranged in the equatorial plane. These two chromosome pair, এটা total कौन 4 chromosome. Total 4 chromosome तो दीटा homologous pair है कि रही चंद माने. So individual chromosome have individual centromere and each centromere attached to the chromosomal fibers. These are chromosomal fibers. Spindle fiber, ये fiber गुड़ा कहते chromosomal fiber. Each chromosome is attached with the chromosomal fibers in both sides. Okay, and they forms two equatorial plate. एपटे गोटे दीटा equatorial plate formation है. When these two sets of chromosomes arranged in the equatorial plane forming two metaphasic plate, then metaphase is complete, and here the orientation of the chromosomes is known as co-orientation. In case of mitosis, it is known as auto-orientation. Auto-orientation आम देखिए mitosis meiosis 2 रे मुझे कहीदेवी केमती auto-orientation क्या कहते. So this is co-orientation. Centromeres towards the pole and arms towards the center. Metaphasic plate. A position only co-orientation. Then metaphase is complete. Then we will come to next phase, anaphase 1. So in anaphase 1 आमे कौन देखिले separation of two homologous pair of chromosomes takes place. एटी जो दीटा पेयर हेकि रहिथिले due to the contraction of a chromosomal fiber gradually contracts towards the pole, pulling each set of chromosomes towards each opposite pole. Then gradually they pull towards the pole. देखा एपटू दुईटा जाउची एपटू दुईटा क्रोमोसोम जाउची जो थी each chromosome have 4 chromatids. Okay. Now when each set of chromosomes when reached at the pole, then anaphase 1 is
complete. Then telophase starts. Telophase रे कौन हम? Telophase रे जान चो? Telophase सांगरे एका सांगरे साइटोकाइनेसिस मध्य हो जाए. हाँ, तो telophase जेतले पहुँचीबो सेतले again जो पहुँची गला क्रोमोसोम, it becomes slightly elongated, not fully elongated, slightly elongated. Okay. Again, each chromosome uncoiled to form a slightly elongated chromosomal structure. Nucleolus reappears and nuclear membrane also reappears in each cell, and cytokinesis takes place at the center by equatorial plane. A constriction appears from the equatorial site in the cell membrane, which grows towards the center and meets at the center, dividing the two daughter cells. तो बर्तमान ये जो दीटा आमर डॉटर सेल है क्रोमोसोम नंबर के ये आमर के 4 ये के 2 2 तो बर्तमान ये 2 हो गला नंबर ये के इनिशियल स्टेज रे आमर के 4 थिला तो ये कौन है हाफ हो गला 4 थिला ये. अच्छा तो ये मेयोसिस 1 कंप्लीट हो गला. Meiosis 1 and Meiosis 2 मझे गोटे इंटरकाइनेसिस थाए. Interkinesis, but it is a very short period of time, and sometimes interkinesis is also absent in many cells. If interkinesis is absent, then the cell will pass from telophase 1 to the prophase 2 directly. Okay, and there is no DNA synthesis in interkinesis. DNA only synthesized in the S phase of interphase. Okay, and meiosis 2 starts. Meiosis 2 takes place in each of these daughter cells. And simultaneously there meiosis 2 takes place in these two daughter cells. Okay, and the orientation becomes the जो सेल डिविजन हम आर ओरिएंटेशन टा प्रीवियस डिविजन रो राइट एंगल हम. So here the centriole comes to that position and division will occur in that orientation. So now this is the cell of prophase 2. Here the nucleus again nuclear membrane starts disappearing and chromosome हाफ थिले से मु हाफ करुच्ची दुईटी दुईटी करुच्ची आउ दुईटा आउ गोटे सेल अच्छी. तो बर्तमान आमर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जहाँ टिके अपियर करथियो टेलोफेज रे इट अगेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग. न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन starts disappearing and the chromosome becomes again coiled and becomes thick and short. Now at the end of prophase 2, nuclear membrane and nucleolus completely disappears. The centriole divides into two and this one of the centriole it moves towards the opposite pole. Then metaphase starts. Metaphase then just meiosis 2 actually is just like mitosis, इक्वेशनल डिविजन. एंड जो दीटा आम क्रोमोसोम देखुचे प्रोफेज 2 रे आम टेलोफेज 2 रे तो आउ दीटा डॉटर सेल फॉर्मेशन हम से दुई दुईटी क्रोमोसोम रहिबो. बट कौन डिफरेंस आम देखिए जेमती सेठी डबल क्रोमाटिड थिला डबल क्रोमाटिड था एवं क्रोमोसोम टा एक्चुअली गोटे डबल क्रोमोसोम सेटा हाफ हेकरे सिंगल क्रोमाटिड हे जो सिंगल क्रोमोसोम हे जो. मेटाफेज at the starting of metaphase कौन हमें देखिए ना individual chromosome they arranged in the equatorial plane. Okay, and chromosomal fibers extended from the pole and attached with the
सिंगल सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। देखो ये क्रोमोसोम रा बोथ साइड रे जो सेंट्रोमियर अच्छी सेंट्रोमियर हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन नोन एज काइनेटोकोर प्रोटीन सेंट्रोमियर इज मेड अप ऑफ काइनेटोकोर प्रोटीन। एटी सिंगल सेंट्रोमियर देखुचे कौन डिफरेंस आम देखुचे एटी आमर मेटाफेज 2 रे आउ मेटाफेज 1 रे मेटाफेज 1 रे देख डबल क्रोमोसोम थिला एवं इंडिविजुअल क्रोमोसोम रो सेंट्रोमियर सहित अटैच होता कि स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोमल फाइबर बट हियर दुईटी क्रोमोसोम जो अच्छी गोटे मेटाफेजिक प्लेट रे अरेंज होती एवं each chromosomal fiber from both side attached with a single centromere गोटे से सेंट्रोमियर सहित दीपटू लगी कौन क्रोमोसोमल फाइबर्स। Okay, when these two chromosomes or these chromosomes arranged in the equatorial plane, then metaphase 2 completed, anaphase starts. Anaphase रो जानिछ कौन हुए एनाफेज रे हुए कौन स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमाटिड्स है स्प्लिटिंग हे जीवो स्प्लिटिंग हे कि कौन हबो ना हाफ क्रोमाटिड गोटे पोल को जीवो आउ हाफ क्रोमाटिड आउ गोटे पोल को जीवो है Splitting of the centromere makes the double chromosome into two equal halves. So, but this chromosome is a single chromosome. So, split हो गला पर दीटा equal chromosome रे convert हो गला एवं each chromosome pulled towards the poles by the contraction of chromosomal fibers. When these two sets of chromosomes reach at the pole, then anaphase 2 is complete and telophase starts. Telophase starting रे आमे कौन देखिबा पुणी again nuclear membrane appeared and nucleolus also reappeared and chromosomes reached at the pole. Hello. Chromosomes reached at the pole. Okay. So two chromosome here, and spindle fibers disappeared. Nucleolus reappeared. Nuclear membrane reappeared. Cytokinesis takes place at the equatorial plane. The cell membrane forms a constriction, and that constriction grows towards the center and meets at the center, forming two equal daughter cells. This division takes place in each of the daughter cell formed after the meiosis 1. ये दीटा रे साइमल्टेनियसली हुए एवं एठी दीटा फॉर्मेशन हम तो केमती हम सपोज एटा हला फर्स्ट डिवीजन एटे न्यूक्लियस होता एन नाउ सेकेंड डिवीजन जो हम केमिति एपटे ए डायरेक्शन रे हेतिला बर्तमान ईच न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू and cell plate or cell membrane formation takes place in right angle to the first division. देखिए 4 daughter cells formed. कि इंडिविजुअल डॉटर सेल एन नंबर क्रोमोसोम अच्छे आम देखिले सेठी भी दुईटा क्रोमोसोम आसला एठी भी दुईटा क्रोमोसोम डबल क्रोमोसोम थिला डबल क्रोमाटिड थिला किंतु एठी सिंगल क्रोमाटिड माने एटा ही गोटे सिंगल क्रोमोसोम हैला तो क्रोमोसोम नंबर से 2 ही रहिला एटा 2 थिला एठी 2 ही रहिला। नेक्स्ट आसीबा हम कोन साइटोकाइनेसिस जो होउची माने आफ्टर डिवीजन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म डिवाइड्स and the process of cytokinesis may be of two types. First है successive type रे कौन होची ना फर्स्ट डिवीजन हैला
फास्ट डिवीजन होला पर सेल वॉल बा सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो गला. After meiosis 1, cell membrane or cell plate formation takes place. Then second division takes place in each cell, forming the second cell plate or cell membrane formation. Successive, gote pore gote. First eta hei sala pore eta hela. But in case of simultaneous, gote ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି simultaneous type. Simultaneous type रे केमती होची फास्ट डिवीजन हो गला एटा पेरेंट सेल फास्ट डिवीजन हो गला 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर meiosis 1 पर after the division of nucleus cell plate or cell membrane formation does not takes place. Cell plate or cell membrane formation takes place after the second meiotic division বা meiosis 2 ଏବେ 4 डिवीजन हो गला न्यूक्लियस रो सॉरी 4 न्यूक्लियस हो गला डिवाइड हो नाउ सेल प्लेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली माने एका संगे रे सेल प्लेट फॉर्मेशन हबो. दिस इज साइमल्टेनियस टाइप, दिस इज सक्सेसिव टाइप. रहला सक्सेसिव टाइप. ओके देन आमे आसीबा कोन significance of meiosis. Significance of meiosis is it maintains the chromosome number in each generation. जेहेतु फास्ट गैमिट फॉर्मेशन है हाप्लॉइड है और गैमिट दुटा फ्यूजन हो पुणी डिप्लॉइड हम और डिप्लॉइड रू ऑर्गेनिज्म डेवलप कला जोटा कि से डिप्लॉइड रहा. तो प्रति जेनेरेशन रे क्रोमोसोम नंबर आम बॉडी रे ऑर्गेनिज्म बॉडी रे सेम रोचे ड्यू टू meiosis है. सो मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर इन ईच जेनेरेशन. सेकेंड सिग्निफिकेंस अच्छे कौन ना वेरिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर आम जो पैकेटिंग स्टेज क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है ताद्वारा जो न्यू ट्रेट व न्यू कैरेक्टर अपीयर कला इट इज वेरी हेल्पफुल इन इवोल्यूशन प्रोसेस फॉर्मिंग न्यू स्पीसीज है. दिस टू आर द सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis. Okay, thank you for watching. Do like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my new video.